Good morning, friends. Myself Kedar Badekar, and today I'm taking the lecture number 32 for the subject, which is the manufacturing technology. Uh, in the previous series of the lecture, which is the lecture number 31, in this lecture we start the discussions on the last chapter from your syllabus, which is the foundry technologies, right? Which is the chapter number 2 as per your the syllabus. And we have only conducted the one lecture for this chapter, and we start the discussions on the basic importance of the casting, how the casting which is performs, and what is the importance of the casting. And we continuing our discussions on the castings with the different patent which is to be available to perform the casting process. So basically our discussions will be focused on the different types of the patent which is available for the casting process, right? So this is our previous discussions we can discussed during the previous series of the lecture. But now in this lecture we start the discussions, or we are continuing the discussions with taking the basic concentrations on the patents. So let's start the discussions on the patents. And basically the our major focus of our today's lecture, which is concentrated on the different kind of the patent allowances which is given on the patent. So there are the different types of the allowances. Allowances, that means a certain kind of the relaxations on that materials, on that patent materials. So let's start the discussions on the patent allowances. So first we start the discussions with the introductions to the patent making. So a patent is a mold forming tool in the hand of the foundry man. So बेसिकली द पेटेंट जो है वो एक हमारे लिए एक मोल्ड फॉर्मिंग टूल है. अगर मोल्ड को आपको प्रिपेयर करना है, मोल्ड यानी ऐसा एक चीज़ जो रेत से बना होगा, जो पेटेंट के ऊपर हम लोग रेत से बना के फिर पेटेंट निकाल लेंगे. उस जो सैंड है, उस सैंड के अंदर जो है कुछ बॉन्डिंग मटेरियल्स ऐड किए होंगे, इसलिए वो जो है वो अपना शेप जो है वो गेन कर लेगा. और उसके अंदर आप जब प्योरिंग मेटल डालेंगे, और जैसे ही आपका जो मेटल है वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा, तो आप क्या करोगे कि जो सैंड का स्ट्रक्चर है ऊपर वाला वो निकाल दोगे तोड़ के, और इस तरह से आपको जो रिक्वायर्ड शेप के अंदर जो है एक ऑब्जेक्ट चाहिए, वो आप ऑब्जेक्ट उससे बना सकते हो. सो जो पेटेंट है वो बेसिकली है क्या, एक मोल्ड फॉर्मिंग टूल है. अ पेटेंट इज़ ए मॉडल और द रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ टू बी कास्ट. यानी जो पेटेंट है वो आपका सेम उसका एक रेप्लिका रहेगा, जिस तरीके का आप ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना चाहते हो, राइट. जैसा आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उसी का सेम शेप सेम साइज़ का जो है वो आपका पेटेंट रहता है. Except for the various allowances, a patent is exactly resemble the casting which is to be made. कुछ अलाउंसेस को अगर हम लोग गिन लें तो पेटेंट जो है वो एग्जैक्टली उसी तरीके का होता है. अगर अलाउंसेस को निकाल दें हम लोग, अलाउंसेस यानी आपने कुछ रिलैक्सेशंस दिया है, राइट. कुछ रिलैक्सेशंस को डायमेंशंस के अंदर कुछ ऐसे इस कुछ रिलैक्सेशंस को हम लोग निकाल दें, तो इस कड़ी के अंदर हम लोग देखें तो उसका साइज़ और शेप वैसा ही होता है जैसा एक ऑब्जेक्ट का रहता है, जैसा पेटेंट का है. अ पेटेंट इज़ रिक्वायर्ड इवन द वन ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी कास्ट. अगर आपको सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट अगर से एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही बनाना है, उस कंडीशंस के अंदर भी आपके लिए पेटेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. सो अ पेटेंट इज़ मे बी डिफाइंड. अगर यहाँ पे हम लोग कोई अगर आपको आके पूछता है, यू हैव टू डिफाइन द वर्ड पेटेंट, सो यू नीड टू डिस्क्राइब दिस वर्ड विथ अ वेरी डिटेल्ड फेनोमेना. सो अ पेटेंट इज़ मे बी डिफाइंड एज अ मॉडल और फॉर्म अराउंड विच a sand is to be packed, which is to give a rise to the cavity which is known as a mold cavity, in which when the molten metal is to be poured, the result is the cast object. तो अगर हम लोग इस
पैटर्न को अगर डिफाइन करना चाहे तो पैटर्न को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ पैटर्न इज मे बी डिफाइंड एज अ मॉडल टू फॉर्म अराउंड द सैंड विच इज टू बी पैक्ड, राइट। पैटर्न जो है वो एक ऐसा मॉडल है जिसके अराउंड सैंड जो है वो पैक की जाती है, बाउंड की जाती है, टू गिव अ राइज टू द केविटी, जिससे केविटी बन सके, और विच इज़ नोन एज अ मोल्ड केविटी इन विच अ मोल्टन मेटल इज़ टू बी प्योर्ड, जिसके अंदर हम मोल्टन मेटल को जो है वो प्योर्ड करते हैं, उसके अंदर डालते हैं, और उसी से जो है जैसे ही वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा तो आपको जो है वो एक कास्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मिलेगा. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द पैटर्न मेकिंग. Now what are the functions of the patterns? A pattern is used to prepare a mold cavity for the purpose of the making of the casting. तो पैटर्न का पहला फंक्शंस होता है कि मोल्ड केविटी को प्रिपेयर करने के लिए पैटर्न जो है वो यूज़ होता है. सो फर्स्ट फंक्शंस ऑफ द पैटर्न इज इट इज़ यूज टू प्रिपेयर द मोल्ड केविटी. आपको ये चीज़ याद रखनी है उसके क्या फंक्शंस होते हैं. वो फंक्शन के अगर आप फंक्शन अच्छी तरह से समझ पाओगे तो इसके अलाउंसेस जो है वो आप इजीली समझ सकते हैं. अ पैटर्न इज प्रिपेयर अ मोल्ड केविटी फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कास्टिंग. अ पैटर्न इज मे कंटेन द प्रोजेक्शंस. पैटर्न के अंदर कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जैसे कुछ शार्प एजेस, शार्प नॉचेस, विच इज़ नोन एज अ कोर प्रिंट. इफ द कास्टिंग इज रिक्वायर अ कोर विच इज़ नीड टू मेक टू बी हॉलो, राइट. अ पैटर्न इज मे कंटेन द प्रोजेक्शंस. पैटर्न कुछ होते हैं, कुछ पैटर्न के अंदर कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, राइट. कुछ ऐसे शेप होते हैं जो जैसे कुछ आपका जो शेप है वो उपसा हुआ शेप हो, ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस हो सकते हैं विच इज़ नॉन एज अ कोर प्रिंट. इफ़ द कास्टिंग इज़ रिक्वायर द कोर, अगर कास्टिंग के अंदर कोर का रिक्वायरमेंट्स है देन इट इज़ नीड्स टू बी मेक होलो, तो वो होलो रखना पड़ेगा. Runner, gate, risers, which is used for filling the molten metals, which is for molding is to be poured, that may be a part of the patterns. ये सारे parts जो है रनर है, गेट्स है, राइजर्स है, दिस आर द पार्ट्स ऑफ द पैटर्न्स. तो फंक्शंस के अंदर ये तीन जो है तभी काम कर पाएंगे अगर जो है जो पार्ट ऑफ पैटर्न्स, अगर पैटर्न आपका सही तरीके से वर्क करता है उसी कंडीशंस के ऊपर आपके रनर, गेट्स और राइज़र जो है वो फंक्शंस कर पाएंगे. अगर आप जब भी इसके फंक्शंस जो है वो स्टडी कर रहे हो तो उसके साथ आपको ये चीज़ जो है वो समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पैटर्न के साथ जो है वो कौन कौन से पार्ट्स जो है वो जुड़े होते हैं. अ पैटर्न इज मे हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग लोकेटिंग पॉइंट्स ऑन द मोल्ड. पैटर्न जो है हमेशा आपको कुछ लोकेटिंग पॉइंट मार्क करने के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट हेल्प कर सकता है मोल्ड के अंदर. एंड देयरफॉर ऑन द कास्टिंग विद अ पर्पस टू चेक अ कास्टिंग डायमेंशंस. और उसी हिसाब से जैसे पैटर्न का एक फंक्शन ये हो सकता है कि आप उस पैटर्न से कुछ मोल्ड के अंदर लोकेटिंग पॉइंट जैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी हिसाब से you can use that patterns to check the dimensions of the casting. So you can use that patterns to check the dimensions of that casting. So next, which is a pattern is establish a parting lines and a parting surface in the mold. So in the previous series of the lecture we are discussing that though if in certain cases there is a huge size of the casting object you have to manufacture, right. So there is certain kind of the limitations are comes with your application is that a very big size of the patterns you can't perform in a single piece. In that conditions you can manufacture these patterns into the two half. We can also say that this is a split type of the patterns, or in that conditions you have to generate the parting lines, or we can say as a parting surface. So that pattern which is establish a parting line or parting surface in the mold. A pattern which is may help the positions a core. pattern जो है हमें एक दूसरी तरीके से अगर
कोर को आपको अंदर पोजीशन करना है। कोर का यूज़ कब होता है? जब आपको कुछ होलो पार्ट्स बनाना है, तब कोर का यूज़ होता है, राइट। इन केस अ पार्ट ऑफ द मोल्ड कैविटी इज मेड फ्रॉम द कोर्स, before the molding sand is to be ram, that is the, you have to stick that sands outside the, on the periphery of the, outside periphery of the patents. So the patent is used for, is also help for positioning a core. core को अगर आपको सही जगह पे प्लेस करना है, उस एप्लीकेशंस के लिए भी जो है वो आपको ये पेटेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट आपके वहाँ रोल प्ले कर सकता है। अ पेटेंट दैट आर प्रॉपरली मेड्स एंड हैविंग अ फिनिश्ड एंड द स्मूथ सर्फेसेस विच इज़ रिड्यूस द कास्टिंग डिफेक्ट। अगर आपका पेटेंट जो है वो एक सही तरीके से फिनिश पेटेंट रहेगा, स्मूथ सरफेस वाला रहेगा, इट विल बी डेफिनेटली रिड्यूस योर कास्टिंग डिफेक्ट्स। वो डेफिनेटली आपकी कास्टिंग डिफेक्ट्स जो है वो उसको रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा। ए प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड पेटेंट्स विच इज़ मिनिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कास्टिंग। अगर आपका जो है वो पेटेंट जो है वो प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड पेटेंट है, प्रॉपर तरीके से उस पेटेंट का कंस्ट्रक्शंस हुआ है, तो उस कंडीशंस के अंदर जो उस पेटेंट को आप यूज़ करके आप मोल्ड बना रहे हो, और उस मोल्ड के अंदर आप लिक्विड मेटल को प्योर करके आप जो है वो कास्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो उस कंडीशंस के अंदर अगर सही तरीके से पेटेंट का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, कंस्ट्रक्शंस हुआ है, तो फिर आपका ओवरऑल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ होगा कास्टिंग के लिए। कैसे? अगर आपका एक्यूरेट साइज़ के अंदर पेटेंट है, तो उस हिसाब से आपका मोल्ड बनेगा और उस हिसाब से आपका कास्टिंग ऑब्जेक्ट बनेगा, तो आपका जो मशीनिंग वर्क है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। अगर मशीनिंग वर्क विल बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अ प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड पेटेंट्स, योर ओवर कॉस्टिंग on manufacturing that casting object will be reduced. So these are the different functions of the patents we will discussed in these lectures, right? So let's start the further discussions, which is the patent materials. From which materials we can manufacture the patents? पेटेंट जो है हमें किस मटेरियल से बनाना चाहिए, तो उसके पेटेंट का मटेरियल सिलेक्शंस करने के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं। उस क्राइटेरिया को जो है वो आपको सही से उस चीज़ को समझना चाहिए, राइट। सो द फॉलोइंग फैक्टर इज असिस्ट इन सेलेक्टिंग अ प्रॉपर पेटेंट मटेरियल। ये नीचे जो आपको दिए गए हैं वो जो सारे फैक्टर्स हैं वो आपको एक सही मायने के अंदर जो है वो आपको यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, जिसका यूज़ करके आप पेटेंट का जो मटेरियल है वो आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशंस ऑन द सिलेक्शंस ऑफ द पेटेंट मटेरियल। द नंबर ऑफ कास्टिंग ऑब्जेक्ट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड। सबसे पहली चीज़ यही रहती है कि आप कोई एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, या आप 100 ऑब्जेक्ट बना रहे हो, या फिर आप 1000 ऑब्जेक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आप कास्टिंग करने वाले हो, ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया उस मटेरियल के सिलेक्शंस के पीछे रहता है। डेफिनेटली ये हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी डिस्कशन किया था, तो आपके पास थोड़ा बेसिक इसके लिए बैकग्राउंड होगा कि नॉर्मली जो कास्टिंग रहता है, जो पेटेंट रहती है, वो नॉर्मली वुड है, मेटल है, कंपोजिट मटेरियल है, वैक्स है, ऐसे मटेरियल को यूज़ करते हुए हम लोग पेटेंट्स जो है वो बनाते हैं, राइट। पर उसका सिलेक्शन किस हिसाब से होना चाहिए, तो उसका सिलेक्शंस का पहला क्राइटेरिया जो है वो, द फर्स्ट क्राइटेरिया विल बी द नंबर ऑफ कास्टिंग विच इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड। द मेटल पेटेंट्स आर परफॉर्म्स व्हेन द प्रोडक्शन क्वांटिटी इज लार्ज। मेटल पेटेंट्स आर परफॉर्म्स व्हेन द प्रोडक्शन क्वांटिटी इज लार्ज। अगर आपको लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर जो है वो आपको ऑब्जेक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर्ड करने हैं, राइट। सपोज यू हैव टू मैन्युफैक्चरिंग 1000 नंबर ऑफ पीसेस और कास्ट 1000 नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। In that conditions you can prefer the metal patents, so it will be
easily handled, easily durable, there is a higher working life, and we can get the maximum benefits of that metal patents. Now the second criteria, which is the design, dimensions, accuracy, and the surface finish. Dimensional accuracy and the surface finish, which is the second criteria. Whenever you are selecting a patent material, you should consider that thing, what kind of the dimensions accuracy you have to require, and what kind of the surface finish is you have to require for the casting. Based on that applications, based on that your needs, you have to choose the patent material. Suppose you don't require the certain high accuracy and high surface finish, in that conditions you can make your patents from the wood materials, which is easy and very cheap patent making materials. While as compared to the wood, the metal which has a higher fabrications and the constructions cost, the overall cost of that material which will be higher as compared to the metals, and it will give a higher dimensions accuracy. So based on what kind of the dimensions accuracy you have to require, or what kind of the surface finish you have to require, based on that the desired material selections will be done. Now the nature of the molding process, आप किस तरीके का मोल्डिंग प्रोसेस जो है वो यूज़ करने वाले हो, पेटर्न के ऊपर सैंड लगा के जो है वो आप मोल्ड प्रिपेयर करने वाले हो. Either you can using the permanent mold casting process, the shell molding process, or either you can use the investment casting process. These are the certain available options for making the molding process. तो आपके लिए nature of molding process, which is the third criteria, right? So you can either use the sand casting, you can either use the permanent mold casting. Sand casting, in the case of the sand casting, you can made the mold from the sand. In the case of the permanent mold casting, you can make the mold with using metal material. Then in the shell molding, you can also made your mold will be made from the metal. And the last, which is the investment casting process. In the investment casting process, here also the mold will be made from the wax, right? So these are the available alternative options for manufacturing the molding process. So based on the nature of the molding process, the your material selections will be also done. Now the method of the molding. So here you have two alternative options will be available with you, which will be the first options, which is the hand or machine molding process, and second हैंड मोल्डिंग प्रोसेस एंड मशीन मोल्डिंग प्रोसेस. आप जो है वो हाथ से मोल्ड बना सकते हो, या फिर मशीन की मदद से आप मोल्डिंग जो है वो बना सकते हो. मोल्ड जो है वो आपका बना सकते हो, जिसके अंदर आप लिक्विड मेटल को प्योर करके जो है वो आप बनाने वाले हो. इस दो कंडीशंस के ऊपर जो है इस चीज़ का सिलेक्शंस जो है वो डिपेंड्स करता है, और इस हिसाब से उसका मटेरियल सिलेक्शंस जो है वो डेफिनेटली डिपेंड्स करता है. द मेथड ऑफ मोल्डिंग, it will be the hand molding machines and the machine molding machines. Now a shape, complexities and size of the casting. These are the another three important factors whenever you are selecting the material for the patents, which is the shape. How the critical and the complexities are observed in the shape of that molding, and how the critical and complexities in the size of that mold or the patents. Based on that, if the complexity is observing is a certain kind of the higher level, in that conditions, this is the difficult things to manufacturing the patents from the materials. So the next, which is the types of molding materials. So the types of molding materials, which is the sand, the different types of the sand which is available to manufacturing the mold
which is the parting sand is like that, the loam sand is also available there. So different types of the molding materials, in that we can using the sand or different kind of the sand, what kind of the sand we are chosen for that applications, that is also an important criteria for the patent selections material. Now the last, which is the high permeability of changing the casting, and hence the patent is the near futures. So permeability is the one kind of the property of that casting, or we can say as a mold. So based on that property, you should take the decisions for the patent material also, if there is a high permeability. At the time of regarding the, if you are not understanding the what is the meaning of the high permeability, we will discuss the properties of the sand. At that time I will discuss what is the actual meaning of the high permeability, which is the permeability which is totally related to the property of the sand, right? There is a two kind of the basic property, that is a refractoriness of the sand and permeability of the sand. So these are the two property which is very important whenever you are choosing the molding sand. So at the time of also the patent, what kind of the high permeability and changing the casting, hence the patent in the near futures. So these are the important criteria for the selections of the patents material, and this all criteria we are keeps in minds whenever we are selecting the patent materials. So which is very important for us at the time of the discussions of the patents. Also we also try to focus in the detail, more details about. Now after discussions of the, in this lecture we are discussing the basic introductions of the patent making process, then the functions of the patents, then the selections of the material for the patents. Like after the material selections, there is a one big issues are coming in the casting process, is the, if we are selecting the metals, right, due to the adverse or the possible effects of the atmosphere on the metals, certain period of the times the metal which is the corroded for some the region of that materials, because normally the patent which is working with the different conditions, there is a high moisturous conditions, high temperature conditions, high pressures conditions. So there is a patent which is facing the different kind of the conditions, patent material which is facing the different kind of the conditions, and for that particular reason you should focus on that time. And we will discuss that issues in the next series of the lectures, which is about the patent allowances. There is a machining allowances, there is a corrosion allowances, there is a miscellaneous allowances, the different kind of the allowances we are given on the patents. So if we are after we are breaking the mold and we are getting the object which is the cast, so as we are going to the machines, the actual, if we are not allowing the allowances, and we are that removing that unwanted top surfaces with including the sands, so the actual dimensions are to be vary. So overcome these issues, we are allowing the certain kind of the allowances on the patent material, so which will be discussed in the next series of the lectures. So this is all about the today's lecture. I hope you all understand the basic discussions of our today's lecture, which is about the importance of the patent making, then the selections of the patent making process, and the functions of the patents. This is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this video lecture. If you have any kind of the questions, doubt regarding this lecture, you can ask me in the comment sections. I will definitely solve your queries and doubt in the next series of the lecture. So
And after watching this video lecture, you have to write down your enrollment number into the comment sections, which will be counted as your online attendance. So this is all about the today's lecture. Thank you so much.